Hello friends, I am Manisha and I welcome you to Excel and Exceed Education. आज के सेशन में we'll be discussing about vocabulary and vocabulary which is relevant or pertaining to or relating to SC CGL examination. Upcoming CGL examination के हिसाब से के according जो vocabulary important है आज हम उस vocabulary के बारे में कुछ discussion करने वाले हैं. आज जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे कुछ शब्द ऐसे होंगे जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में रिपीटेटिवली पूछे जा चुके हैं. कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप बेसिकली यू हैव डन इन सम अदर वे, मतलब आपने उनको नाउन फॉर्म एडजेक्टिव फॉर्म में पढ़ा है, हम उनको किसी और फॉर्म में पढ़ सकते हैं. देयर आर वर्ड्स जिनका नाउन फॉर्म में कुछ मीनिंग होता है कुछ एडजेक्टिव फॉर्म में उनका मीनिंग बदल जाता है, राइट. जैसे इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंस. These are two different frames of one is adjective, other is noun, right? So ऐसे कुछ शब्द. Also हम शब्दों का सिर्फ मीनिंग ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम शब्द पढ़ने के साथ साथ हम उनके कुछ synonyms की बात करेंगे और कुछ antonyms की बात करेंगे. So let's get started with this session and a very interesting session, important as well. चलिए, the first word that we discuss today is subservient, right? Subservient इसका मतलब क्या होता है? What is meant by subservient? Subservient अगर हम कहते हैं that my brother or I am subservient. So what is subservient? Basically a person, ऐसा इंसान जो किसी दूसरे इंसान की बात बिना कुछ कहे मान ले, right? Basically ऐसे लोग जो बहुत easily submit कर देते हैं किसी को भी, जिसको हम कहते हैं submissive, right? तो एक synonym हो सकता है इसका submissive. Subservient वो लोग हैं, I'll state this again, subservient वो लोग हैं जो लोग दूसरों की बातें बहुत आसानी से मान लेते हैं बिना किसी सवाल जवाब के. आपने मुझे कुछ कहा और मैंने आपकी बात मान ली, so I'll be subservient. Like for example, I am subservient of my parents, right? Which means मैं उनकी बात बिना कुछ कहे मान लेती हूँ, बिना कुछ सवाल जवाब किए, right? So that is subservient. So one who obeys others unquestioningly. That particular person is termed as subservient, right? Synonyms that we can have for this word can be, I said abhi, submissive. Okay. We can also say someone who is docile. I'll not write one here, I'll write the synonyms. The synonyms वो शब्द होते हैं जो कि उस शब्द से मिलते जुलते होते हैं, सेम मीनिंग होता है उनका. So when you write submissive, docile, we can write compliant or we can say downtrodden. ये synonyms है, ये वो शब्द है जिनका मीनिंग सेम है जैसा कि subservient का है. जबकि antonyms वो शब्द होते हैं जिनका ऑपोजिट, विपरीत मीनिंग होता है, ऑपोजिट मीनिंग होता है अगर उस शब्द के हिसाब से देखें. ऐसा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समवन हु इज इंडिपेंडेंट. कोई इंडिपेंडेंट है वो हमारी बात नहीं मानेगा. अनकंस्ट्रेन्ड, राइट. तो ये कुछ एंटोनिम्स हैं सबसर्वेंट के. सिनोनिम्स याद करना आसान होगा क्योंकि मीनिंग सेम होता है. एंटोनिम्स भी इजी है बिकॉज ऑफ मीनिंग एकदम ऑपोजिट होता है, राइट. सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी डिस्कस्ड इज सबसर्वेंट व्हिच मींस वन हु ओबेज अदर्स अनक्वेश्चनिंगली, राइट. बिना किसी सवाल जवाब के जो दूसरे की बात आसानी से मान ले. चलिए, द सेकेंड वर्ड दैट वी हैव इज रिडंडेंट. रिडंडेंट तो बेसिकली हम सबने सुना है रिडंडेंट डेटा कंप्यूटर्स में, right? Something that is of no use, something that is unnecessary, right? Like for example, if I say, बहुत बार ऐसा होता है जब हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, right? There are times when we learn something or when we go for something, हमें सिलेबस नहीं पता, हम बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. So there are things जो कि redundant हैं, जो कि useless हैं, जो कि unnecessary हैं, पर हम उनको भी पढ़ लेते हैं, right? हमें choice of topics नहीं पता होता, right? So that is redundant. Redundant is something that is useless, or you can also state it as unnecessary. Something that is useless or unnecessary, that is redundant.
The synonyms that we can state for redundant could be, like for example, we can say something that is, अच्छा कोई चीज अगर हमारे पास बहुत great amount में आ जाती है, huge amount में आ जाती है, we say excess, right? We can say something that is surplus, or you can say profuse, right? We can say profuse, or we can say superfluous. So that is also superfluous. Superfluous is also an important word. So is profuse. ये शब्द जो profuse है, ये हमें confuse करता है with profound. बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को. Profuse is abundance, which means बहुत great amount में कोई चीज है, अगर वो surplus है तो हो सकता है उसकी जरूरत नहीं है, वो superfluous है, मतलब useless है. It is unnecessary to have that. That is profuse. But when we talk about profound, profound is something that is deep, intense, or serious. Right? So this is the difference between profuse and profound, which is a bit confusing. थोड़ा confusing है हमारे लिए, ठीक है? चले, तो ये हुए synonyms for profuse or I must say redundant. But what are antonyms for redundant? Redundant के लिए antonyms क्या हो सकते हैं? Something that is necessary. कोई ऐसी चीज जो बहुत necessary है हमारे लिए, वो हो सकती है, या फिर essential, necessary or essential. तो necessary और essential हमारे redundant के लिए antonyms हो जाएंगे, मतलब कि opposite शब्द. ऐसी चीज जिसकी जरूरत है, जो कि compulsory है, it is a compulsion, so that thing will be opposite for redundant. Right? चलिए, let's move on to the third word, third vocab word that is again important. The third vocab word that we have is boisterous. Now this is important. Boisterous. Now boisterous is what? Now see, it has a meaning that will go in two different things. ऐसा boisterous होता है noisy plus cheerful. Noisy and cheerful. That is boisterous. Okay? मतलब शोर तो है ही, but शोर खुशी का है. ठीक है? Noisy and cheerful. घर पर बेसिकली क्या होता है, अगर हम सारे समर वेकेशंस, राइट, हम जब छोटे थे, आर गोल्डन डेज, राइट, बेसिकली उस समय क्या करते थे हम, बड़े खुशी के दिन होते थे समर वेकेशंस में, सारे सिबलिंग्स साथ हैं, तो सारे भाई बहन, रिलेटिव्स एंड ऑल. सो व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, हम सब शोर मचाते थे. वी यूज्ड टू हैव सम acts of amusement, कुछ काम ऐसा करते थे. We used to play jest and so. तो वो चीजें क्या है, वो चीजें, वो जब शोर होता था, वो क्या था? That was boisterous, right? That was noisy and cheerful. So the synonyms that we can have for boisterous, the synonyms that we can have for boisterous is rambunctious. I'll change the marker. It is rambunctious. Rambunctious, we can say knock about, knock about, clamorous, right? These can be the synonyms. We can also say exuberant, because it is also cheerful. Now see, when you write exuberant, exuberant is an adjective, but when you say exuberance, it is a noun. Out. Any which ways इसका मतलब होता है cheerful. ठीक है? Antonyms, if we wish to have antonyms for this, so we can have, like for example, restraint, or we can say quiet. Now see the spelling of quiet, confusion यहाँ भी होता है. Q-U-I-T-E and Q-U-I-E-T. So Q-U-I-E-T is quiet, that is less noise, right? Q-U-I-T-E is what? It is something that is, if I say she's quite intelligent, matlab to an extent, like I'm talking about intensity or degree of intelligence, right? I'm not kam zyada ki baat nahi kare. Enough, she's quite intelligent, she is enough, like degree of intelligence I'm talking about. So this is the difference between these two words as well. So next word that we have, the fourth word, let's discuss. It is preponderance. Again an important word, preponderance. Preponderance is basically something that is
good in or great in number or quality. It can be number, it can be quality, it can be importance. कोई चीज अगर जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसको बहुत ज्यादा माना जाता है, मार्केट में कोई गुड है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी क्वालिटी ज्यादा है, जिसकी इंपॉर्टेंट, जिसकी मांग ज्यादा है, उसको भी प्रीपोनेंस कहा जा सकता है. अगर हमारे ऑफिस में हमारे बॉस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो हमारे बॉस को प्रीपोनेंस कहा जा सकता है, राइट. सो दैट इज प्रीपोनेंस. इट कैन बी ग्रेट इन नंबर or importance, both ways. Great in number or importance, both ways it can work. So the synonyms for preponderance we can have is prevalence. Like prevalence, we can say predominance. We can say predominance, supremacy, and there is a particular phrase used to refer to someone, to denote someone who is a predominance or a preponderance. That particular word, that particular phrase that we use is the whip hand. The whip hand, that is a person who is very important, who has greater importance in particular organization. ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट में ऐसा पर्सन जिसकी महत्वता बहुत ज्यादा है, उसको हम विप हैंड या प्रीपोनेंस कह सकते हैं. ये एक फ्रेजल फॉर्म है जो डिनोट करने का, रेफर करने का, राइट. कुछ एंटोनिम्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे शब्द जो इसके विपरीत या ऑपोजिट मीनिंग दे हमें. इट कैन बी सबऑर्डिनेशन, और क्योंकि यहाँ सुप्रीमेसी लिखा है हमने, तो हम यहाँ पर इंफीरियोरिटी लिख सकते हैं. We can write inferiority here. So we have preponderance, which means great in number. Please remember this. It can be great in number or importance. This is important. It can be great in number or importance. Also synonyms है prevalence, predominance, supremacy, and phrasal form लिखा एक, that is whip, the whip hand. And antonyms can be subordination or inferiority. Inferiority, okay, I've missed an I there. So these are the 4 important words that we have discussed till now, right? So we shall move to the next words. The next 5th important word that we'll discuss is after preponderance. We'll discuss preponderance, right? So the next word that we'll discuss is relinquish. Relinquish. So relinquish का मतलब क्या होता है? Give up, quit कर देना, त्याग देना. हमने कोई चीज त्याग दी, नहीं हो रहा त्याग दिया, नहीं चाहिए त्याग दिया, गुस्से में आए क्विट कर दिया, राइट. सो दैट इज relinquish. बेसिकली यू कैन से गिव अप. अगर इनके सिनोनिम्स की बात करें relinquish के, तो हम लिख सकते हैं बेसिकली वी कैन से abandon, quit, chicken out. Chicken out is also, that is basically withdraw. अगर हम give up कर रहे हैं तो हम basically withdraw ही कर रहे हैं. Renounce, forswear, right? So these are synonyms for relinquish. Important है chicken out. Basically ये एक idiom की तरह भी इस्तेमाल होता है, right? तो chicken out, renounce and forswear. Antonyms that we can use here for relinquish is, that is retain, or we can say keep. We can also say maintain, right? So that is, अगर वो चीज को हम give up ना करें, quit ना करें, maintain करके रखें, keep करें, like, so that will be antonyms for this. We can also add one synonym here, that is seize, right? We can add one synonym, sorry, I should make it correct, it will be synonym. Synonym हम लिख सकते हैं, that is seize. हम add कर सकते हैं, आप भी add कर लीजिए, that is seize. Okay, the next word that
we can have, that we have is, not can have, but we do have, is dwindle. Dwindle is to decrease, कम होना, गिरावट किसी चीज में, right? That is decrease. Synonyms that we can have is diminish, right? Decrease, diminish, decline, decline. We can also say lessen, slum. This is P, slum. So these are basically the synonyms. Also, this important word, abhi recently in an article we've read that China's economy has plummeted the recent years. So plummet also can be a synonym. Plummet is decrease or wither. Okay, so these are synonyms for dwindle. This is an important word. Confusion होता है dwindle और swindle में. There's the same word but सिर्फ D की जगह क्या हो जाता है? S हो जाता है. तो dwindle तो होता है decrease, but swindle होता है cheat करना किसी को, right? That is swindle and dwindle. Okay, चलो. Antonyms that we can write is basically increase, or we can say rise, or we can say rise or increase. Okay, we can say flourish, right? We can say thrive, right? So these can be the antonyms basically. So diminish, decline, lessen, slump, plummet, wither will be synonyms, which means diminish, decline, that is dwindle. But on the other hand, antonyms will be increase, flourish, thrive, or we can say verge on, right? So this can be the antonyms. Let's move on to the next word. The next word that we have is seventh one, that is procrastinate. So procrastinate means to delay. किसी काम में देरी, जैसे हम पोस्टपोन कर देते ना कोई काम, आज नहीं कल करेंगे, वोकैबुलरी आज नहीं कर रहे, आज मन नहीं है कल पढ़ लेंगे, तो उससे ही प्रॉब्लम आ जाती है, राइट? Vocabulary is something that can never be memorized. It can only be inculcated, and that too through practice. You can do it via practice, that's it. आप अगर रोज उसको समझ रिवाइज करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, तो vocabulary अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगी. You cannot memorize that. Okay, it can only be inculcated. I repeat that again and again whenever I come to you, right? Synonyms that we can have for procrastinate can be postpone, right? That is basically the framework or the general word that we use. We can say put off, or we can say stall or temporize. Stall or temporize. So these can be the synonyms for procrastinate. The antonyms that we can have is, अच्छा कोई काम हम आराम से कर रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली चल रहा है काम, धीरे धीरे चल रहा है, तो पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया, पुट ऑफ हो गया. We have basically temporize or stall. So these words we have. Antonyms में क्या हो सकता है? कोई काम जो जल्दी हो जाए, right? Like for example, accelerate or hasten, or we can say expedite, right? So these are the, or we can say rush, hurry. So these can be the antonyms. Chale. So this is procrastinate, another important word. So next important word that we have is number 8. It is modicum. Again, which is important. See, we have done a word which is important, okay. We have done a word that is great in number or importance, right? We did it just now. That was preponderance. So that particular thing. वैसे ही modicum को पढ़ सकते हैं. This is a small quantity of a particular thing. A small quantity of a particular thing, that is modicum. For example, synonyms we can have speck or fragment
of something, किसी चीज का छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा, speck हो सकता है, fragment, अभी I told you that can be, or it can be tinge. Generally we use this word tinge. This is used, basically you must have heard it through chefs, right? So tinge, or we can say morsel. So these words we can use as synonyms. Antonyms that we can use is, क्योंकि हम बात करें small quantity, अगर कोई चीज़ large quantity में present हो तो वो lot होगा, whole भी हो सकता है, entirely भी हो सकता है, तो वो हमारे लिए antonyms हो जाएंगे, right? So these are next 4 words that we discussed: relinquish, dwindle, procrastinate, and modicum. Let's move on to the next words. 2 words that were left for today, that is number 9 and number 10. Number 9 says Philistine. This is important. ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी हुआ है. Philistine. Philistine का मतलब होता है hostile, basically unfriendly, right? That is Philistine. Hostile. जो कि ज़्यादा शांत ना रहता हो, अनफ्रेंडली है इसका नेचर, जो इल मैनर्ड है, बेसिकली अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, राइट, वो लोग फिलिस्टीन होते हैं. Synonyms we have many words we have as in synonym, so we can go for uncivilized, uncultured, we can say barbarian, right? We can say someone who is unworthy, we can say unworthy, we can say uneducated, ill-mannered, ill-bred, right? There are many words, Okay, there's another good word here written, churlish, and another word that I can recall through churlish is boorish, right? So we have boorish, and another word that I can recall from boorish is lowbrow. It's not yo bro, it's low bro, right? So this is again an important word for us. So we have so many synonyms for Philistine. It is very important for us. Antonyms that we can have for this, for Philistine, it can be basically proletarian, or someone who is decent in his acts, or we can say unconventional as well. This will be, ये एक indirect synonym हो सकता है, unconventional, okay? It can, antonym, indirect antonym, but it is again a good word, right? So we have proletarian, we have decent, we have unconventional, okay? The last word for today that we have is encomium. Encomium is something, basically a speech or writing जो हम लिखते हैं किसी के लिए, या जो speech deliver करते हैं किसी को praise करने के लिए, right? किसी को praise करने के लिए, a speech or writing to praise someone. Like for example, you must have heard of this word eulogy. This is basically, this is a speech, this is a basic writing for someone to praise something. Basically लिखा जाता है लोगों के बारे में, कुछ अच्छा उनको praise करने के लिए. कोई actor है, कोई अच्छा काम करता है, right? तो उनके बारे में उनको praise करने के लिए लिखा जाता है. That is basically. We can also have synonyms for accolade or acclaim. Accolade or acclaim. So acclaim or accolade or eulogy will be the synonym for encomium. Antonyms that we have for this word, इस शब्द के जो ऑपोजिट मीनिंग के जो वर्ड, अब हम किसी को यहाँ प्रेस कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो अगर किसी की इंसल्ट की, उसको डिस्पैरेज किया, उसको बेलिटल किया, या फिर उसको डिस्करेज किया, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी डिस्करेज किया, तो वो एंटोनिम्स हो जाएंगे. ट्रिवियलाइज भी लिख सकते हैं, ट्रिवियलाइज. Trivialize will also be antonym for encomium. So these are the words that we have for you for today, and these are important 10 words, 10 vocabulary words that are very useful for you, that will be useful for you all. We'll come to you with more of these
more important words. We'll come up with few of the exercises to the one-word substitutions for your upcoming examinations. I hope you must have enjoyed this, and if you did, do like and subscribe our channel, and don't forget to share it with your friends. Till then, goodbye and thank you.